So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about OPEC, what we call it as OPEC. And recently it was in news because of some reason. So uh, we are going to discuss about the reason why it was in the news. In fact, I hope you all are aware of this. And what will be the impact of the decision. We'll be discussing in detail about the history of OPEC also, and members, headquarters, and things related with OPEC plus, etc. So if I'm audible and visible, please write yes in the comments. And this is with regards to the oil prices, right? And I'm sure you must be aware, oil prices are very, very important. You know? Yes. Yes, good evening everyone. Is my voice clear? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? If yes, then please write yes in the comments. Okay, yes. So let us begin. So today's class discussion, first we'll be discussing why OPEC is in the news. Then we'll be discussing in detail about OPEC. Then we'll be discussing headquarter, formation, members, which is of course related with OPEC. Then we will be discussing in today's class about OPEC plus. What is OPEC plus? Okay, and how it is different from OPEC. Then we will be discussing this 1973 oil crisis. This is also very important because it is said perhaps after 1973 we are seeing such crisis in 2026, especially with regards to the war that we have seen in West Asia and all. So that is what you should be knowing. Then the next is impact of the recent UAE decision. So UAE has taken some decision with regards to OPEC that we are going to discuss. So what will be its impact? This also is important and we'll be discussing it in today's class. तो ये सारी चीजें न्यूज में थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि let's have a class. So first of all, why it is in the news? The news because UAE, United Arab Emirates, has decided to quit both OPEC as well as OPEC plus. ठीक है? So we'll be discussing it in detail. ये काफी ज्यादा न्यूज में था 3rd मई को. अच्छा, can anyone tell me? Just I wanted to know. 3rd May is a very famous day. कौन सा डे होता है? 3rd May is famous for which day? Yes, good afternoon, Sharia, CLAT aspirant, Sara, Path. Welcome to the class. बताइए 3rd May, what is that? Anyone? Yes, Path. Very good. World Press Freedom Day. Press Freedom Day. That is what you should be knowing. Next, let's talk about it. इसके context में और भी बहुत सारी चीजें. We'll be discussing it in paid classes. Next is full form of OPEC. Please tell me. Yes, 3rd May is World Press Freedom Day. Path and Shari, you both were right. Full form of OPEC. Please, anyone tell me. Organization of an org. I'm writing Petroleum Exporting Countries. Petroleum exporting is the key word here. Means it is a grouping of countries which export petroleum, and they have made a grouping. अच्छा, अगर आपको if you do not know anything, what will you get an idea about this? इससे क्या मिलता है? क्या idea लगेगा? Yes, very good. Many people answering. It means all the prominent petroleum exporting countries have come together. ठीक है? तो उससे होगा क्या? They decide together what should be the production of oil. And in this way, they will regulate oil prices. Regulate international oil prices. For example, if they reduces the production, oil prices will increase. Price will increase. And if they'll increase the production, prices will decrease. Okay. Because that is the idea behind this. So all these countries have come together so that they can maintain oil prices. And you know, oil prices are very important. Actually, it can be used as a tool of diplomatic relations. Yes. A tool of foreign policy or tool of international relation. Anna. So बहुत सारे countries say actually countries do friendship because of oil, etc. A lot of reasons. One of the reason is oil. तो oil बहुत important है international level पर. So because of course even today we are moving towards renewable energy, but still we are very much dependent
on the fossil fuel like oil and petroleum, natural gas, etc. ठीक है. Yes, they have a monopoly, right? हाँ. मतलब इस तरह होगा कि they can control the oil prices. Next is, since we are talking about OPEC, in which year OPEC was founded or formed, whatever you can say. 73, 1973, 1960, 1951, 1991. What is the right answer? Yes, MK Anirudh, Rohan, Siddhivij, Gladys, but you're right. 1960. B is the right answer. Anna. So OPEC was founded in 1960. That's what you should know. And it was founded by how many countries? And where actually in 1960, which city it was founded? कौन से city में? Yes. Yes, very good. B, 5 countries. Yes, Baghdad. Yes, Rohan. Sri Kumar, you're right. Huh? And Path, you're also right. So the city is Baghdad, which is the capital of modern day Iraq. है ना? ठीक है. So B is the right answer. 14 September 1960 in Baghdad, OPEC was founded by the first 5 members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arab, and Venezuela. So okay, let us see here. है ना? So Iran, Iraq, here is Kuwait. ये है Kuwait. Kuwait, Saudi Arab, and Venezuela. Saudi Arab, and here is Venezuela. ठीक है. So these 5 were actually the founding members of this. ठीक है. And the establishment happened in Iraq में एक जगह है Baghdad. Very famous city, and I'm sure you must have heard his name. And you should be knowing one more thing about this. जैसे old name वगैरह कभी कभी ईरान पूछते हैं. जैसे ईरान का old name is, what is the old name of Iran? I've seen sometimes खास के COT वगैरह भी इस तरह क्वेश्चन कभी देखा है मैंने, है ना. So old name of Iran is Persia, है ना. And old name of Iraq, Iraq का old name क्या है? Yes, yes, very good. Persia. Mesopotamia for Iraq. Mesopotamian civilization was there, है ना. Mesopotamia, Sumerian civilization, Babylonian, ये सभी वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर इराक. हाँ, राइट. ठीक है. सो ये सब पता होना चाहिए. दीज आर द 5 कंट्रीज. अच्छा, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लैट ने. आई थिंक 21 वगैरह में कहीं पूछा था. what is this is actually what intergovernmental organization, non-governmental organization. इस तरह intergovernmental organization means multiple governments, multiple countries government are members, है ना, of OPEC. ठीक है. So उस टाइम पर the founding members were 5 founding members. ठीक है. So that's what you should be knowing. And why we are talking about Venezuela is very important. Why is Venezuela so important? Recently we have seen USA sending its force to capture the Venezuela's president. कार्टेल मतलब ग्रुप को कहते हैं, इंटरनेशनल कार्टेल, है ना. सो ग्रुप डूइंग अ ट्रेड, उसको कार्टेल कहेंगे. सबको मिलकर अगर कोई बिजनेस का ट्रेड करे, दैट्स कॉल्ड एज कार्टेल वर्ड. ठीक है. यस. व्हाई इज वेनेजुएला सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल? लाइक कैन एनीवन गिव यू एन आइडिया? हाँ. लार्जेस्ट नेचुरल ऑयल रिजर्व, हाँ, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व, है ना. प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है लार्जेस्ट, इट इज ऑफ वेनेजुएला. ठीक है. फिर है सऊदी अरब, ईरान, कनाडा एंड अदर्स. बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर पूछा जाए ऑयल एक्सट्रैक्शन या प्रोड्यूसर अगर वर्ड लिखा रहे, देन द आंसर इज अमेरिका. ठीक है. बट रिजर्व सबसे ज्यादा इट इज विथ वेनेजुएला. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज व्हाई आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट वाज कैप्चर्ड. व्हाट इज हिज नेम? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? Was captured. Nicolas Maduro. He was captured by USA. Under which operation? Operation का नाम बताओ. देखो सब कुछ ऑयल एंड नेचुरल गैस पे ही फ्लो होता है. सारा चीज बात वहीं पर आके. So these things like we are talking about OPEC, है ना. OPEC का जो डिसीजन है of UAE is coming out, है ना. All these are actually related. हाँ, his wife Celia and Nicolas Maduro under Operation Absolute Resolve. Very good. हाँ, Absolute Resolve. They were arrested. January की बात है ना, first week of January somewhere, है ना. So that happened. That's what you should be knowing. ठीक है. अब let's talk about this. Right now, how many members are there in OPEC? हाँ, 3rd January का I think हुआ था. Yes, you're right.
How many members are there in OPEC organization of petroleum exporting countries? 11. Actually 12 था, but UAE has come out on 1st May. तो आज के दिन today UAE is no more a member, है ना? I've told you. So now we are having 11 members. Till few days back it was 12. So 5 were founding members and now plus 6 others, so 11 now total we have. So you can see Algeria, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait. तो ये मैं आपको मैप में दिखा दूं. उससे पहले okay, let's talk about the headquarters, then I'll show you the map also. After UAE's exit, है ना? हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक कहां मिलेगा आपको? ये सब पूछते हैं, हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेते हैं. Austria, Vienna. Yes, Rohan Sikon. Very good, very good. Huh? I'm very happy to see that you all are responding and responding it correctly. ठीक है. So Vienna, Austria मेन के हेडक्वार्टर है. तो ये इंडिया है, ये यूरोप है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है. This is Austria, not Australia. Vienna. ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है. ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है. हाँ, इनिशियली जेनेवा में था, बट यू शुड नो राइट नाउ, है ना, वियना ऑस्ट्रिया. ठीक है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ओके. तो आप देख सकते हो, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट 79.5% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व है ओपेक में. यानी समझो 80% ऑयल रिजर्व जो है ना, वो 80% एक्चुअली ओपेक में. सो ऑफ कोर्स दे कैन कंट्रोल ऑयल प्राइसेस एट इंटरनेशनल लेवल, है ना. है ना. मिडिल ईस्ट में 67.2%. जैसे मैंने आपको बताया ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, है ना. वी हैव डिस्कस्ड इट. ठीक है. सो ऑलमोस्ट आप ऐसे रफली समझ सकते हो कि 80% इनका कंट्रोल है ऑयल प्राइसेस पे. सो ऑफ कोर्स दैट्स, एंड दिस वाज एक्चुअली टू काउंटर 1960s 70s में, टू काउंटर द सेवन सिस्टर्स ओलिगोपोली. ओलिगोपोली मींस मोनोपोली से, ओलिगो मतलब होता फ्यू, मोनोपोली ऑफ फ्यू कंपनीज, स्पेशली सेवन सिस्टर कंपनीज है. सेवन सिस्टर कंपनीज इनको कहते हैं, बिग ऑयल या सेवन सिस्टर कंपनीज. ठीक है. सो दे वर मोस्टली वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न कंट्रीज कंपनी. So to counter their monopoly in regulating the oil prices, these organizations came together. ठीक है. Okay, that is what you should know. उसके बाद 1970s में restriction in oil production led to a dramatic rise in oil prices. कब हुआ था ये oil prices? Can anyone tell me? हेडक्वार्टर क्यों it does not produce? Someone is asking, sir, ऑस्ट्रिया वियना में तो ऑयल प्रोडक्शन होता ही नहीं. I'll ask one more question. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? Can you tell me? You have a valid question, CLAT aspirant, है ना. Someone is saying कि सर ऑस्ट्रिया तो ऑयल प्रोड्यूसर है भी नहीं, तो वहां क्यों हेडक्वार्टर है? हाँ, 1973 ऑयल क्राइसिस. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ मालूम है? दुबई में. They do not play cricket. They are not very famous in cricket, है ना. So ऐसा होता है कई बार. ठीक है. That the headquarter you will find at a place where they have nothing to do with that, perhaps, है ना. तो वही बात है. तो दुबई बहुत फेमस तो नहीं ना क्रिकेट खेलने में, as far as my knowledge is concerned, है ना. So it happens. ठीक है. There are many reasons, other reasons for that, है ना. खैर, we're talking about this. तो 1970s में oil crisis होता है 1973, and you will be surprised to know that this is linked again with Israel-Palestine conflict. Can anyone tell me? कोई बता सकता है थोड़ा सा? What was the oil crisis? Sudden increase in oil prices. इसका लिंक Israel-Palestine conflict से. So please watch this class. First of all, I've told you everyone to please watch this class. Make notes out of it. This is very important. Yom Kippur War. Very good. 1973. Great. Sambhav Sharma. हाँ. So this is actually a very long drawn conflict. I'm sure you must be aware. तो ये वाला region है ना. So this is actually we have done it, है ना. इसको मैंने पहले ही बताया कि ये जो मॉडर्न डे ये वेस्ट बैंक रीजन है. This is Gaza, है ना. And these two together are called as Palestine. ठीक है. So ये जो वॉर है ना, जैसे पास्ट में बहुत सारे वॉर्स हुए. So Israel has always been supported by USA and most of the European countries, like US, UK, Britain, France, Germany. वो सब लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज ने they have supported Israel. So there are a lot of reasons, है ना. So जैसे पास्ट में बहुत सारे वॉर हुए 1948, 56, 67, 76. So here we are talking in this context. ये वाला Yom Kippur War 1973. Just after that 1973 oil crisis happened, and basically what happened was this was the war, and just after that King Faisal of Saudi Arabia, he suddenly increased the oil prices, leading the oil embargo against Western nations supporting Israel. So he had said that we will not be exporting oil to nations which are supporting Israel. उसके बाद बहुत तेजी से sudden increase in oil prices ऐसा कुछ हुआ था. आप देख रहे हो 70, 71, 72, 73, यही ना 73, 1973 के आसपास. ठीक है.
सडन इंक्रीज होता है ऑयल एम्बार्गो। ये WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये पूछा था किसी एग्जाम में, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट रिसेंटली न्यूज, दिस वाज आस्क्ड इन आई थिंक यूपीएससी एग्जाम फ्यू इयर्स बैक। ठीक है, इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक तरह का ऑयल होता है, क्रूड ऑयल। ठीक है, ठीक है। तो इसका प्राइस अगर आप देखोगे WTI का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का सडन इंक्रीज हुआ था, फिर धनक, है ना, उसके बाद भी इंक्रीज हुआ था, बट यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑयल शॉक ऑफ 1973 कहते हैं, ऑयल शॉक, ये जो भी कह लो, 1973। एंड दिस एक्चुअली इसी टाइम पर एक बहुत फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी अदर देन ओपेक। ओपेक तो 1960 में बन गया था। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? अ वेरी फेमस इंटरनेशनल ग्रुपिंग वाज फॉर्मिंग अराउंड दिस टाइम, मतलब दे हैड स्टार्टेड फॉर्मिंग बिफोर द ऑयल क्राइसिस, बट उसके बाद आफ्टर दैट एक्चुअली दे बिकेम मोर फॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्ली। वेरी फेमस इंटरनेशनल ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड इन दिस बैकग्राउंड। तो कितना सारी चीज मैंने कनेक्ट करके, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ओपेक, फिर एक और ग्रुपिंग है उसको कनेक्ट कर दिया। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना। मतलब अलग अलग सिलोज में पढ़ोगे तो अलग बात है, लेकिन जब मजा तभी आता है हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का जब आप उसको कनेक्ट करोगे। G5 एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज G7 टुडे, उस टाइम पर G6 था, इट बिकेम एक्चुअली G ओरिजिनली इट वाज G6, next year it became G7, then over a period of time it became G8, again G7, so the answer is G7. Yes, Rohan Sri Kumar, you are right. ठीक है, 1973 ऑयल क्राइसिस से जस्ट बिफोर दे हैड स्टार्टेड टॉक्स एटसेट्रा, बट आफ्टर दिस, है ना, जो निक्सन शॉक वगैरह निक्सन के जमाने में, सो उसके बाद लाइब्रेरी ग्रुप बनाया गया G6, है ना, लाइब्रेरी ग्रुप देन G6 एंड ऑल। ठीक है, तो उसी के बैकड्रॉप के आसपास बना था। ठीक है, G7 एंड नाउ हु विल बी होस्टिंग G7 दिस ईयर? इस पे खैर विल बी हैविंग अ सेपरेट क्लास, बट व्हेन विल बी हैविंग अ G7 समिट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस, है ना। कहां पर पता? इवियान लेस बायंस, इवियान, दिस इज द सिटी, है ना, जून में होगा। सो जब होगा सो विल बी हैविंग सेशन ऑन दैट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपेक प्लस। व्हाट इज दिस? ये क्या है? So OPEC plus means OPEC countries will be there plus some other countries will be there. Matlab, if you are a member of OPEC, you are automatically member of OPEC plus. If you withdraw from OPEC, you will of course like that's the idea behind this, है ना. So if you are a member of OPEC, you will automatically become member of OPEC plus. तो OPEC plus में क्या देखो, ओरिजिनली तो OPEC कंट्रीज था ऑस्ट्रिया वियना में, बट ये OPEC plus में कुछ इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया गया, इसमें OPEC plus नॉन OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी हो जाएंगे. Yes, means they are oil producing country but they have not joined OPEC, है ना. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इज रशिया, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल ग्रुप है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू शुड नो. सो दीज आर ओपेक कंट्रीज एंड दीज आर एडिशनल. तो ये दोनों मिला के ओपेक प्लस कहलाएंगे, बोथ विल बी कॉल्ड एज ओपेक प्लस, है ना. सो दीज आर एडिशनल कंट्रीज, है ना, जैसे रशिया हो गया, बहरैन हो गया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, दीज आर ओपेक प्लस कंट्रीज. ठीक है, सो सेक्रेटरी जनरल आप देख सकते हैं हैतम अल गैस है ना. तो ये सब पता होना चाहिए, है ना. खैर तो यही है ना. दैट्स व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. सो नाउ स्पेशली 2016 के बाद ये फॉर्म हुआ था मोर स्ट्रांगली, है ना, ओपेक प्लस. तो ये लूज ग्रुपिंग है या इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, बट ऑफ कोर्स दे आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. राइट रोहन एंड एमके अनुरुद्ध, यू बोथ राइट, है ना. तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा ना. एंड अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग आएंगे, यहाँ पर सूडान वगैरह पे. ठीक है, देयर इज अ रीजन विल बी कमिंग टू दैट. अब देखो, नाउ let us talk about impact of UAE leaving OPEC. तो सबसे पहले why UAE left OPEC? Can anyone tell me? United Arab Emirates leaving OPEC. कुछ कोई आइडिया? anyone? अच्छा, OPEC इज जनरली स्लाइटली, या OPEC प्लस जो है ना, एक तरह से एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म था ओरिजिनली. यस, है ना. Did not want to meet OPEC because the de facto ruler of OPEC was Saudi due to Saudi Arab monopoly. Want to meet quota demands. ठीक है, shift in energy policy. हाँ, ठीक है. देखो OPEC जो था ओरिजिनली क्या था? एंटी वेस्ट, है ना. आई टोल्ड यू कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, 7 वेस्टर्न कंपनीज, उनको चैलेंज करने के लिए दे सेड दे विल बी हैविंग अ सेपरेट ग्रुपिंग वेयर वी विल एक्चुअली रेगुलेट ऑयल प्राइसेस, एक तरह से आपको. ठीक है,
हाँ, so max तो actually but the thing is I'm sure you must be aware in recent years UAE is going closer to Israel and Saudi and America, and recently we have seen some friction, UAE's friction with Saudi Arab at some places. Okay, so that's why they have moved aside. Oh, can you give an example of UAE going closer to Israel? De facto ruler of OPEC Saudi has Saudi ka, like there are a lot of roles. So can you please tell me any example of UAE going closer to Israel? Yes, Yemen में and yes there were issues, and especially Sudan में काफी था. Recognizing Israel Abraham Accord, ये बहुत फेमस है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कहाँ चला गया वो Abraham Accord? Yes, CLAT 2020 asked question. So it was mostly done by Israel and UAE, है ना, and later on other countries joined it. ठीक है, so one is this, ठीक है, they are very much closer nowadays. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. दूसरी बात ये है कि what we are talking about is there are places where UAE and Saudi Arab has issues. एक तो यमन में थोड़ा सा था, but now the main is actually in Sudan. Means whatever the allegation is, I'm sure you must be aware, since 2023 we are witnessing civil war in Sudan. Between which two factions? कोई बता सकता है? Which are the two factions? One is called as Rapid Support Forces, another is Sudanese Armed Forces. ठीक है ना? अब ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, it is said that in international relation Saudi Arab was perhaps supporting SAF and UAE was supporting RSF. ऐसा कहा जाता है. It is what the scholars say, like the foreign policy expert. So they were on opposite sides in this. Okay, so that is what, and Saudi and UAE are backing opposing sides in Sudan civil war. These were some of the reports. Can you please make a video on Sudan? देखता हूँ, वैसे लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था कन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका करके. You search on YouTube conflicts in Africa career launcher law intense, you will get a video. ठीक है, तो उसमें in that class one section I have discussed about Sudan civil war. ठीक है, तो ये one of the reasons. So on May 1st the UAE officially exited the OPEC and OPEC plus, है ना. It was established in 1960. तो ये हो गया OPEC plus, the broader alliance formed in 2016 that includes OPEC countries plus other non-OPEC countries, but they are oil producer like Russia, है ना. ठीक है, तो अब जहां पे भी रशिया रहेगा ना, मोस्टली इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म जनरली. कैन यू मेक अ वीडियो ऑन मुगल हिस्ट्री लाइक यू डिड फॉर दिल्ली सुल्तनत? अच्छा ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ रोहन सिंह कुमार. ठीक है, देखता हूँ अगर मौका मिलेगा सो विल बी हैव क्लास. ठीक है, ओके. सो डिफरेंस बिटवीन यूएई एंड ओपेक एंड पार्टिकुलरली सऊदी अरब हैव बीन सिमरिंग फॉर अ व्हाइल. तो पीछे कुछ दिनों से यूएई और सऊदी अरब में टसल चल रहा था, और ओपेक इज सऊदी डोमिनेटेड, है ना, सऊदी कंट्रोल व्हाटएवर यू कैन से, है ना, independent from UK. So in 1970s में UAE जो है became independent etc. ना, allocates oil production, है ना. UAE का बहुत, OPEC का has a huge role in controlling oil prices, है ना, and Saudi Arab plays an important role, है ना. Saudi Arab ramp up ramp down production, है ना. So Saudi Arab का उसमें ज्यादा मतलब रोल था, है ना. So he has a quota of this much, है ना, but has a capacity of this much. By 2026 capacity increased by 5 million, है ना. has a quota of 3.5 million barrel but has a capacity of इतना, यानी इनके पास कोटा 3.5 मिलियन बैरल का था लेकिन इनका कैपेसिटी ज्यादा है, so they have more capacity to produce. So they said if we'll remain in OPEC, perhaps we'll be able to produce lesser than what we have the capacity, lesser than the potential. Okay, तो एक ये बात हो गई, है ना. So that's what in the news, है ना. Then question of Saudi Arab, and so they had issues with Saudi Arab. There were frictions happening in UAE and Saudi Arab have been increasingly at loggerheads. Loggerheads मतलब टसल, आगे सामने, है ना. लॉगरेट सामने सामने आ जाना, है ना, है ना. तो यमन में इन लोगों ने प्रॉक्सी बैटल खेला, सो दे वर ऑन ऑपोजिट साइड्स, है ना. मतलब थोड़ा सा इशू हो गया था फ्रिक्शन. देन वी हैव सीन इन सूडान आल्सो, है ना. The USB has been active in seeking leverage in Libya, है ना. So these are the issues. There have been actually they were actually loggerheads, मतलब they were on opposite sides, UAE and Saudi Arabia at some places, है ना. That's why perhaps they have decided to come out of it, है ना. So these things, and अभी Strait of Hormuz crisis वगैरह चल ही रहा था. These things were happening. ठीक है, UAE bore the brunt of Iranian attacks which were more than what even Israel faced. तो हाँ, चूंकि UAE एकदम सामने में था, तो UAE पर भी वॉर काफी हुआ जब ईरान का वॉर हैपेंड.
So a lot of places, even आज भी news देखा था that some Fujiara or somewhere actually it was attacked, है ना. So that is what they are saying, that more than Israel, perhaps UAE also witnessed that attacks. तो यही सब article में लिखा हुआ है. These are the things they are talking about. That a lot of bases, American bases are also there, na? US bases there, so that were attacked by Iran. And as the war began, UAE and Saudi Arabia sought use alternative to restore some 4.5 million barrels out of 115 billion that had stopped flowing across the strait, है ना. So उसके बाद क्या हुआ, जब वॉर हुई तो उसके बाद और फ्रिक्शन बढ़. अल उदैद एयरबेस कतर में, उसमें फुजियारा में दूसरा एयरबेस है. आप नाम देखना ना, फुजियारा के बेस का नाम, ठीक है ना. फुजियारा हिट हार्ड बाय द अटैक्स, है ना. So that's why these things were in the news. पहले पास्ट में अंगोला और कतर भी लेफ्ट कर चुके हैं. This also you should be knowing. In the past, OPEC, Angola and Qatar were the previous countries which had left, है ना, but they were smaller players. On the other hand, UAE is the OPEC's third largest producer. So it means UAE coming out will have more impact as compared to Angola or Qatar coming out of it, है ना. ठीक है. Kazakhstan, Algeria are part of OPEC plus, है ना. ठीक है. So these things were, है ना. So India का तो good relation है UAE से. We have signed CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement with 2022. That's why आज भी अटैक हुआ, so इंडिया ने काफी ये किया, है ना, प्रोटेस्ट किया सकता है. हाँ, ओपेक प्लस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओपेक इज मोर इंपॉर्टेंट. ओपेक प्लस थोड़ा सा लूज इनफॉर्मल ग्रुपिंग है. ओपेक इज मोर स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग, ठीक है. यस यू राइट. कतर ने नहीं छोड़ा ओपेक प्लस, है ना. Since independence, you has been a bigger employer of Indian diaspora. Yes, a lot of Indians live in UAE, है ना. We have a very good relations, है ना, with UAE. So these are the things being talked. तो आप देख सकते हो फाउंडिंग मेंबर्स, जो ब्लू कलर के फाउंडिंग मेंबर्स, ये मैंने बता दिया, है ना. रेस्ट आर देखो, है ना, डार्क ब्लू और फाउंडिंग मेंबर्स. करंट जो है मीडियम ब्लू जो है वो करंट मेंबर्स हैं, ठीक है. और रेड वाले जो है, जैसे ये UAE है, कतर, दे हैव लेफ्ट इट. रेड वाले इंडोनेशिया भी किसी जमाने में होता था मेंबर, है ना, है ना. सो फॉर्मर ओपेक मेंबर्स, है ना. सो यहाँ पर भी ये थे, इक्वेडोर है, इक्वेडोर, ठीक है. ये वाला कौन सा कंट्री है? अंगोला इज देयर, आई थिंक. हाँ, अंगोला. ये कतर है, UAE, अंगोला. दिस इज इंडोनेशिया. सो इनमें से रेड वंस जो है वो प्रीवियस मेंबर्स हैं, है ना, ठीक है. और ये ओपेक प्लस जो है वो लाइट ब्लू कंट्रीज, जिन्हें रशिया वगैरह मिला लोगे, कजाकिस्तान, ये सब तो लाइट ब्लू कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है. ये सब थिंग्स, ठीक है. सो यहाँ भी देख सकते हो ओपेक का ऐसा है, ओपेक प्लस का, है ना. सो दीज आर द थिंग्स. UAE exit from OPEC signals closer alignment with US interests. मैंने आपको बताया ना. So now UAE is going closer to Israel and USA, and we have seen in the past like Abraham Accord and etc. and away from Saudi Arabia etc. ठीक है. So और एक जो चीज और न्यूज में आ रही थी कि Saudi Arab was earlier an arch rival of Iran, मतलब जैसा बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशन में, but in recent years there have been some thaw intentions or reduction in friction, है ना. That's what you should be knowing, ठीक है. UAE has announced its abrupt exit from OPEC. ठीक है. OPEC is dominated by Saudi Arabia. UAE had the second highest share, है ना. Second most swing producer. कहीं पे second लिख रहे, कहीं पे third important producer लिख रहे हैं, ठीक है. At some place, है ना. Major oil producer, less coordinated supply control थी. OPEC works by setting up. So impact ये सब होगा. हाँ, UAE could increase production independently. So UAE will not be dependent on OPEC on production. इन्हें दूसरे से dictate नहीं होंगे. Now they can have their own. That's what. So they want to come out because they perhaps wanted to produce more or something like that. They want independent control of the oil, natural gas. है ना. OPEC influences weakens, है ना. So UAE economy, है ना, could reflect, है ना, renewable energy. They might be moving towards renewable energy and other sectors. That might also be there, है ना. Tension with Saudi Arab, we have discussed that. We have seen some sort of a friction type thing, है ना. Limited immediate shock. So हो सकता है अभी immediately वो shock नहीं हो, but over a period of time maybe we can see some changes in that, है ना. So this is all about today's class. We have discussed in detail whatever is required for exam purpose से जितना था हम लोगों ने उसको डिस्कस करा लिया. So tomorrow we'll be discussing about SCO, Shanghai Cooperation Organization, and you know the reason why it has been in the news. तो उसको भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे. And we have seen question also last year, actually CLAT 2026 में क्वेश्चन आया था Shanghai Cooperation Organization. So we'll be talking about that tomorrow. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you very much.